So for the first one, acceleration tangential is equal to alpha into r, Very good. where alpha is the angular acceleration and r is the radius vector. Okay, radius vector or position vector, absolutely correct. And what is this acceleration centripetal? Yes, anyone? Sir, it is negative omega square cross radius vector. It's not cross, negative omega square radius vector. Yes, you can write down that, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में होगा, यानी मिहिर वो वेक्टर नोटेशन में है. वहां से हमें क्लियरली पता चलता है कि पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर सेंटर से पार्टिकल की तरफ जाता है और एक्सेलरेशन सेंटीपिटल पार्टिकल से सेंटर की तरफ जाता है. तो वो सिर्फ हमें मैथमेटिकल वो वेक्टर नोटेशन में, तुम बिना वेक्टर भी बोल सकते हो. यानी अगर मैंने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, जब तो मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं डाला है, यानी इट्स इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड. यस, योर वन आंसर इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर. एनी अदर आंसर्स यू हैव इट फॉर दिस? Absolutely correct, Rakshit. Why don't you unmute yourself, Rakshit, and answer? Yes, Rakshit. Why can't you unmute and answer? Yes. What about the other answers? Okay, students. It's very easy to get two answers, two more answers, students. और ये कैसे होगा मालूम है, students? Simply, if I ask you, students, can you give me the relation between linear velocity and angular velocity for a particle performing circular motion? Hope you understood the question. Anybody who can give me the relation between the answers now, linear velocity and angular velocity for a particle performing circular motion? Please unmute yourself and answer. Anyone who knows the formula for this? Come on, students, what are you doing? Things are done. Still dozing off, sleeping. Oh, the temperature is dropping like anything. Feeling very cold. Socks वगैरह पहन के बैठो. हाँ बोलो. Another can be omega 2 minus omega 1 upon T2 minus T1. My dear, वो तो अल्फा का फॉर्मूला. My dear, ये अल्फा का फॉर्मूला तो बोल. Alpha is, hello, what are you doing, Mihir? मैंने तेरे को क्या बोला? Yes, sir. मैंने बोला तो ये अल्फा का फॉर्मूला है डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. इसको मैंने कैसे याद रख, ये मैंने नहीं पूछा था. और ये तुमने क्या बताया ना, जैसे कि हम करते हैं ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? लीनियर एक्सेलरेशन. तुम क्या बोलते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी, है ना? ये किसके लिए Yes, होगा? sir. मतलब अगर कोई कार सीधी जा रही है तो उसके लिए ये एक्सेलरेशन है. लेकिन वही अगर कार को मैं सर्कुलर मोशन में भेज रहा हूं तो उसके लिए अल्फा आएगा.
dv by dt की जगह dy ओमेगा by dt आया। मैंने तुम्हें ये पूछा, आई वांट अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स। So what exactly my formula? V is equal to equal R. to omega to r. R alpha. R alpha कहाँ से आएगा? R ओमेगा होगा माय डियर। क्या हो गया है हे भगवान रक्षित, सारे फॉर्मूलाज की बैंड बज रही है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सोचा यानी देखा तुमने देखा यानी यू ऑल हैवंट गॉन थ्रू। स्टूडेंट्स मैंने लीनियर और एंगुलर टर्म्स के फॉर्मूलाज दिए कि नहीं दिए तुम्हें? हाँ स्टूडेंट्स, एक तरफ लीनियर एक तरफ एंगुलर सारे फॉर्मूलाज दिए थे कि नहीं दिए थे स्टूडेंट्स? हाँ। Yeah. Yes, sir. एंड सेकेंडली आई टोल्ड हाउ टू, अगर मैंने पूछा चलो डिराइव दिस रिलेशन v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा, तो तुम क्या करते? तुम लिखते सर s बार इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r, differentiating both the sides with respect to time. So ds by dt, d theta by dt cross r. What is ds by dt? v omega cross r. आ गया तुम्हारा रिलेशन? स्टूडेंट्स ये सब कराया था कि नहीं कराया था? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कराया है कि नहीं कराया है? Yes, sir. Differentiating both the sides with respect to time. v is equal to omega bar cross r bar. फिर इसी को वापस हम लोग ने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, u इनटू b मेथड लेके। फिर हमें दो एक्सेलरेशन मिला था, एक टैंजेंशियल मिला था, एक रेडियल मिला था। टैंजेंशियल जाता था वाज अराउंड द टैंजेंट, रेडियस वेक्टर वाज अराउंड द रेडियस, उसका हम लोग ने रिजल्टेंट निकाला था अलोंग द डायगोनल। गौरी, डिड वी डू इट? यस और नो? मिहिर, डिड वी डू इट? Yes, sir. We did it. मुझे ये बताओ देन स्टूडेंट्स, व्हाई still struggling? Students, I'm telling you one thing, this chapter is very easy to get it. बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट। हाँ ये बात सही है कि इसके अंदर मैथमेटिकल रिलेशंस आ रहा है भाई, और उसका इजी तरीका मैंने बताया था, हाउ टू रिमेम्बर इट। एक तरफ लीनियर, तुम्हारे लीनियर फॉर्मूलाज लिखो ना, जितने तुम्हें लीनियर आते हैं वो लिखो। फ्रेंड्स, हाउ टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स आल्सो मेड इट वेरी क्लियर। तुम्हें ये पता है कि कोई भी बॉडी को अगर तुम सर्कुलर मोशन में मूव करते हो इन अ गिवन प्लेन, तो तुम्हें ये पता है कि गिवन प्लेन के अंदर अगर तुम मूव करते हो तो तुम्हारे तुम्हारे लीनियर टर्म्स किस तरफ जा रहे हैं? वाई एक्सिस पे जा रहे हैं। तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर, फोर्स सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे होगा, और तुम्हारे सारे एंगुलर टर्म्स जेड एक्सिस पे होंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए IJK का रूल यूज कर सकते हो और आंसर्स लेके आ सकते हो। वही अगर क्लॉकवाइज हो गया तो नेगेटिव जेड के ऊपर होगा एंगुलर टर्म्स। तुम एक तरफ लीनियर टर्म्स लिखो और फिर तुम क्या लिखो यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन टैंजेंशियल, फोर्स टैंजेंशियल। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, फोर्स सेंट्रीपिटल। हो गया। ये सारी चीजें बता स्टूडेंट्स, ये बता, ये डायग्राम दिया था कि नहीं दिया था तुम्हें? हाँ स्टूडेंट्स, तो तुरंत स्टूडेंट्स ये पहले बताओ, ये डायग्राम दिया है कि नहीं दिया मैंने? आई ड्रॉन दिस एंड आई Yes, sir. टोल्ड यू। Yes. और उसके बाद लीनियर टर्म्स आते तो एंगुलर टर्म्स के, व्हाई डू यू स्ट्रगल, व्हाई डू यू टेक सम टाइम? तुरंत में क्लिक होना चाहिए यार, ये एनालॉग के हिसाब से जा रहा है। और फॉरगेट अबाउट एनालॉग, हम लोग ने डिफरेंशिएशन मेथड से भी तो हम लोग ने निकाला है ना, लिमिटिंग रेशियो लेके डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा फॉर्मूला का खेल है, और छोटे 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 फॉर्मूलाज है, कहाँ बड़ा फॉर्मूलाज है भाई। अभी तक तुम्हें जितने भी फॉर्मूलाज देखे अभी तक, डिड यू गेट अ ह्यूज फॉर्मूला, अ बिगर वन? हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर,
y is equal to tan theta into x minus g x square upon 2 u square cos square theta। अभी मैं पूछूंगा वापस, तो ये इतने स्टूडेंट्स है ना, इसमें से हार्डली एक या दो को पता होगा। कितना बड़ा फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था ये जो मैंने अभी बताया? कौन सा फॉर्मूला था? आई टोल्ड यू अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन का। स्टूडेंट, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फॉरगॉटन, भूल गए हो। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलो माना कि ये लंबा फॉर्मूला है, याद नहीं रह रहा है इसलिए भूल गए, और याद करने का टेक्निक भी बताया था, y is equal to ax प्लस और माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है, a और b कांस्टेंट होता है, तो इसी की जगह पे y is equal to tan थीटा into x आ जाएगा, तो तुम्हारा a tan थीटा है। अभी सी द पैराबोलिक पाथ, माउथ ऑफ द पैराबोला इज फेसिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, तो ये माइनस आएगा। दिस इज g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा आ गया b। फ्रेंड्स, इसके लिए माना कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कि चलो भाई लंबा है, प्रैक्टिस नहीं किया, याद नहीं रह रहा है। फॉर्मूला लंबा है तो रीजंस है नहीं याद करने के। फॉर्मूलाज छोटे हैं फिर भी रीजंस ढूंढ रहे हो नहीं याद करने के। दिस इज समथिंग रियली ridiculous. Hope that your parents who are right now into the lecture sitting next to you all, having the teas and coffee and whatever it is, a reading paper, they should understand कि नहीं what is happening with your studies. ऐसे नहीं होता स्टूडेंट। No. If in case if I look at the entire 30 students are there into the class. Yes, रक्षित बोलो क्या पूछना है रक्षित? सर अगर हम आर ओमेगा को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर सर आर अल्फा ही आएगा ना, तो आई थॉट यू वर आस्किंग दैट। No. मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? Derive a relation, no, give me the formula। मैंने पूछा give me the formula between linear velocity and angular velocity। तूने टर्म्स को नहीं सुना। linear velocity का मतलब v है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा यानी ओमेगा है, रेडियन पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये तो सबसे पहले पूछ दिया था, तो गौरी had answered alpha into r। I getting it? यस And then when I further said it करके, तो alpha some you said it omega 2 minus, लेकिन ये alpha is angular velocity for this one। I asked you what are the other ways of writing it। अभी देखो what are the other two ways of writing it? other two ways में हम क्या करेंगे मालूम है? ध्यान से सुनना। अगर सपोज मैं ओमेगा को यहाँ पे v by r सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा? v square by r square into r। तो कहने से my next formula will be v square by r। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया फॉर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। अगर मैंने पूछा तीसरा फॉर्मूला तुम क्या करोगे, तो सर ऐसा करते हैं ना, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, अभी आर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर के जगह पे कहना है पुट वी बाय ओमेगा। व्हाट इज माय आंसर? ओमेगा इनटू वी। नाउ सी, डिड यू गेट योर थ्री फॉर्मूलास? योर फर्स्ट फॉर्मूला विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, सेकंड फॉर्मूला इज वी स्क्वायर बाय आर, थर्ड फॉर्मूला इज वी इनटू ओमेगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. So students, when alpha is angular acceleration and that is rate of, very good Minu, angular acceleration is a rate of change of angular velocity students, d omega by dt. Tangential acceleration is alpha into r. Are you getting it? Acceleration centripetal, there are three formulas। यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रीड करने के टाइम पे तुम्हें वहां पे कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, दैट विल बी एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ हिंट विद इन द प्रॉब्लम। अगर कोई भी पाथ सर्कुलर है स्टूडेंट्स, उसका रेडियस वेक्टर तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम को रीड करना है, क्या क्वेश्चन पूछा है ओमेगा के बारे में या क्वेश्चन पूछा है वी के बारे में।
तो तुम्हारा फॉर्मूला चेंज होते रहेगा। कहाँ पे तुम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लोगे, इसके लिए कहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर लोगे, ये तो ओमेगा इंटू वी है। So that depends how do you go about with it. Is this much matter clear to all of you? Yes, sir. Everyone? Okay. Now, students, can anybody give me the formula for force centrifugal? Students, have you heard about the word centrifugal? Students? Yes, sir. Okay, can you tell me, Om Panchal? What is centrifugal according to you? So it is a force which goes towards the center. Hey, outwards the center. Okay, outwards. Fine, very true. Prisha is also. Bolo? Sir, it is a force. It is a pseudo force which goes radially outwards. Absolutely correct. Absolutely correct. Even Prisha is also given the answer. Students, centrifugal एक type का pseudo force है. Pseudo force का मतलब क्या हुआ? बता सकते हो? Students, pseudo force का मतलब क्या हुआ? है ना? It is an imaginary force. Yes, imaginary force, है ना? उसका अगर मुझे और अच्छी तरह से बताना हो तो स्टूडेंट्स क्या क्या इन फोर्सेस का वेरी गुड श्रेया व्हाई कांट यू अनम्यूट एंड आंसर श्रेया तो श्रेया मेरा विजन स्क्रीन पे इसलिए आई कैन सी योर टेक्स्ट बट व्हेन आई एम लुकिंग एट द बोर्ड हाउ कैन आई सी योर टेक्स्ट है ना and the text hardly occurs for few seconds, maybe a second or 2 seconds at the most. Mativan, every time there is a problem with the mic. Okay, fine. जैसे तुम्हारी मर्जी. स्टूडेंट्स अगर अगर तुम लोग स्टूडेंट्स मैंने बताया तुम लोगों को have told you about centrifugal or pseudo whatever it is. Students, or did I speak about centripetal only? He told us about centripetal force. Okay, absolutely correct, Gaurav. Students, ये जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना centripetal and centrifugal force, where exactly you have learned? कहाँ पे पढ़ा है तुम लोगों ने? Laws of motion में? Yes, sir. And it comes under classification of force. Students, can you classify force? How do you classify force? को बता सकता है? तो शायद जब भी तुम लोगों ने फोर्स को क्लासिफाई किया होगा ना स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली.
फोर्स को जब भी तुम लोगों ने क्लासिफाई किया होगा तो तुमने क्लासिफाई किया होगा दो कैटेगरीज में, एक तरफ लिखा होगा रियल फोर्स और एक तरफ लिखा होगा सीडो फोर्स। ये वो वाला है, आई गेट इट। अभी रियल फोर्स है क्या? फोर्सेस जहां पे ओरिजिन और सोर्स होता है। सीडो फोर्सेस जहां पे नो ओरिजिन, नो सोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन नॉट बी ओबेड, वो होते सीडो फोर्स। उसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर तुम देते हो तो, अगर मैं सर्कुलर मोशन के बारे में जाता हूँ यहाँ पे ही, यहाँ पे अगर मैं बता दूं सर्कुलर मोशन के अंदर, तो ये हुआ मेरा फोर्स सेंट्रीपेटल और ये हुआ मेरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। एक होता है रेडियली इनवर्ड्स और एक होता है रेडियली आउटवर्ड्स। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल रेडियली outward force. That means directed from the center, from towards the center of gravity of the particle outwards. फिर तुमने पढ़ा होगा ये जो रियल फोर्स है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. What is that classification? You must have learned about conservative force and non-conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स को तुम लोगों ने नाम दिया होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसको तुमने नाम दिया होगा फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन, impulsive force, force due to collisions we consider, even nuclear force, which is a short range force. ये सारे तुमने पढ़ा हो। अभी यहाँ पे मैंने बताया है सेंट्रीफ्यूगल, स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Now simple question, if in case if I try to raise you students, suppose you are sitting with your dad in a car. The answers are, please everybody. Minu, question to you. Minu, are you listening? Minu, are you listening? Okay, question to you. Suppose you are sitting with your dad in a car and your car is driving it on a circular path and he takes a sudden left. He's driving and he's taking a sudden left. So, Minu, where exactly you will be shifting to the, will you be stationary or will you move here and there? And in what direction you will be moving? If he takes a car to the sudden left, tell me, where is your movement? So my question is, will you move or will you be still, stationary? And if you're moving, where exactly are you going to move? Will you move forward? Will you move backward? Will you move left? Will you move to the right? That's my question. कहाँ पे move करोगे? आगे की तरफ जाओगे, पीछे जाओगे, left में जाओगे? Absolutely correct. She's answering. She's texting it. Minu, can't you unmute and answer? Mic is not working. है ना? Students, तो यहाँ पे what she has said is absolutely correct. यानी अगर dad sharp left लेते students, so exactly meaning she's going to go towards right. और जब मीनू राइट में आती है उसी टाइम पे उसके पापा ने उसको क्वेश्चन पूछेगा, भाई तू राइट में क्यों आई? मैंने तो तुम्हें नहीं खींचा, ना ही किसी ने तुम्हें पुश किया है. There was no push, there was no pull. So there was no push, there was no pull, but then also you came towards the right. है ना? So what made you to come? The exactly same question Minu raised it to Sir Isaac Newton. लेकिन Isaac Newton could not answer for that also. He could not answer. Because he said it that you are getting it because you are in a non-inertial frame of reference. यानी वहां पे एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वहां पे ना ही हम ओरिजिन और सोर्स को वहां पे डिफाइन कर सकते हैं. तो उसने बोला कि भाई एक अज्यूम कर ले, एक इमेजिनरी फोर्स तेरे पे लगा हुआ है और उसको नाम दे दिया सीडो फोर्स.
अब ये सर्कुलर पाथ में जा रहा हो तो उसको नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, a radially outward force. From the center, students, the force is directed from the center along the radius passing through center of gravity outwards. My question to you is, can you give me the formulas for force centrifugal? You'll say, yes, sir, why not? Any object, the answer is no. Listen carefully. For example, अगर मैं satellite लेता हूँ, students, if I'm taking a satellite, now suppose this is a satellite. A satellite is revolving around the earth. Agreed? It performs uniform circular motion, students. है ना? So since it's in anti-clockwise direction, all the angular terms are positive, right hand screw rule. So when the satellite is performing circular motion, what kind of force is required for it? So you need force centripetal. वो force centripetal कौन provide कर रहा है? Sir, it's providing by the gravitational force of the earth. लेकिन ये force देखो कहाँ से कहाँ direct होता है? From the satellites towards the center. तो तुरंत कोई बोलेगा सर उसकी वजह से तो सैटेलाइट अंदर की तरफ आना चाहिए, अर्थ की तरफ आना चाहिए. अगर ये फोर्स लग रहा है तो सैटेलाइट को तो अपना ऑर्बिट छोड़ना चाहिए ना, अपना ऑर्बिट छोड़ना चाहिए और धीरे धीरे उसका वाइंडिंग स्पाइरल होना चाहिए एंड देन इट शुड फॉल ऑन द अर्थ. बट डू यू सी एनी सैटेलाइट कमिंग ऑन टू द अर्थ एंड स्ट्राइकिंग द अर्थ? नो, बिकॉज we assume there is one more force which is acting onto it. One more force which is acting onto it, which is equal in magnitude. And opposite in direction to the centripetal force, and that is called as force centrifugal. दोनों का magnitude same है, लेकिन what about the direction? Opposite. So centripetal force, centrifugal force, two forces are equal in magnitude, opposite in direction, acts on the particle. Now if I take this force over here, अगर ये force को यहाँ पे लेता हूँ तो can I say force centrifugal plus force centripetal is equal to 0. So can I say algebraic sum of net force acting on the satellite is equal to 0? है ना? Algebraic Yes. sum of net force acting on the satellite is equal to 0. Can I say the satellite is in equilibrium? Yes. What kind of equilibrium is this? Is it static? No. Dynamic. It's in motion. Are you getting, students? मैंने पूछा कैन यू गिव मी द फॉर्मूलाज फॉर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल. ऑफ कोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होगा वो सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होगा. अभी यहाँ पे अगर मैंने 3 फॉर्मूलाज पूछे तो क्या करोगे? सर मल्टीप्लाई बाय m कर दो ना, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? m r ओमेगा स्क्वायर पहला फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा m v स्क्वायर बाय r हो जाएगा, तीसरा m इंटू v इंटू ओमेगा. क्या ये 3 फॉर्मूलाज क्लियर हुए सेंट्रीफ्यूगल के, जो कि सेंट्रीपेटल के भी है? Yes. Is this clear, students? So students, force is simply mass into acceleration. अगर मैंने force centripetal पूछा है तो mass into acceleration से सिर्फ mass को multiply करना है बस. अगर मैंने force tangential पूछा है तो mass into acceleration tangential होगा students. तो m into alpha into r हो जाएगा. ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है जब भी तुम MCQ सॉल्व करते हो. ऊपर से मैंने रोटेशनल काइनेमैटिक्स भी दिए थे. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इनटू अल्फा इनटू थीटा, theta in the n second of its motion is equal to omega naught plus alpha by 2 into bracket alpha into bracket n minus half, displacement during nth second of its motion. क्या मैं इसको इरेज कर दूं स्टूडेंट्स अभी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, students, can you tell me
Is force centripetal and force centrifugal, are they action and reaction forces? चलो अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो are they action and reaction force? Students, No, sir. force centripetal and force centrifugal, क्या ये action and reaction force है? No, sir. Mary saying it no. Who's this? Please let me know. Please let me in. Ashada, how many this thing device you'll be using it? Arshada, just unmute yourself. Arshada, unmute yourself. Sir, I was rejoining with the other device. Why was the reason you have this device sufficiently working? And why you put it over the JEE and all? You have other device also, you're entering with 2 devices? No, sir, I'm just entered with one device. But you had other device also. Somebody is there in your name with JEE also, Arshada. Yes, sir, I was with the other device. I was joined by 2 device to let you know that I am in. अरे my dear, you are in, I know that, but you are already in. तो ये दूसरा डिवाइस किसका JEE वाला जो किया है वो अब निकाल दिया. सर वो डिवाइस चेंज कर रही थी मैं. Okay, fine. और कितना लेट आए हो हर्षदा? व्हाट इज दिस यार? ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? इतनी Sorry, ठंडी है sir. पता है, इतनी ठंडी है पता है, ठंडी बहुत है ना हर्षदा? हाँ सर. कहाँ पे रहते हो? वेयर आर यू स्टेइंग, व्हिच प्लेस? सर पनवेल में रहती हूँ बट अभी Oh my फिलहाल मैं गाँव God, आई you are हूँ. in the forest area, you are closer to the mountains, यस है ना? यस तो सर. ठंडी ज्यादा होगी कि नहीं? हाँ सर वहाँ ज्यादा है पर यहाँ बहुत ज्यादा है. अच्छा, है ना? ऐसा करता है कि सोने को मन करता है ना, ऐसा करते हैं लाइट्स ऑफ करके सो जाए सारे. हाँ, सर एवरीबॉडी. हाँ बोलो. सर अरे बोलो, क्या बोलना है हर्षदा? Want to say something? नो सर. Okay, fine. Students, let's proceed ahead. Harshada wants to do so. It seems like that करके इतनी ठंडी है, but it's fact, students. सुबह सुबह शायद तुम लोगों को उठने का भी मन नहीं किया करता होगा. But imagine, students, imagine your mom. Please, students, don't harass your parents, and especially mom. Early morning, she's getting up, maybe before you or maybe with you, but instantly she puts her hand in that cold water. Because she has to clean some utensils. तुम्हें ब्रश करने के टाइम पे भी तुम्हें गर्म पानी शायद मिलता होगा. But see herself, non-stop she's working with that cold water. For you don't see that Kenya, she's putting so much of pain. So I need to do my physics properly. हाँ, देखा किसी का रिप्लाई नहीं. यस किसी का नहीं आएगा. अगर अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता ना तो कब से मैं यस पोस्ट कर देता. मेरे को सारे 31 स्टूडेंट्स के यस आ जाते थे. Students, please see to it all these things. Okay. Okay, let's move further, students. Okay. So we completed with this part of it, students. Okay, now we move further at my question was centripetal and centrifugal force, are they action and reaction forces? So it was who answered? Mihir, you answered or somebody else answered? Yes. So can you explain it? Why not the action reaction forces? क्यों नहीं है? Sir, action reaction force requires 2 bodies like Very force to act on each other. Very good. Students, centripetal and centrifugal forces are 2 forces. Of course, they are equal in magnitude. They are opposite in direction. लेकिन they act on same body. Whereas action and reaction acts on 2 different bodies. That is based on Newton's third law. समझ में आ रहा है?
That is how we consider. So we take it that is force centripetal and force centrifugal we consider is they are not action reaction forces, students. Okay, one is radially inwards and one is radially outwards, students, we consider. Is that clear? Okay, now let us understand further, students. Now we move further ahead with respect to a next mathematical relation to be understood, students. We'll be going first of all, students, for a person to be moved in a rotating drum, students. Okay, now this is actually multiple choice question also, students. Suppose if in case if I ask you, students, there is a rotating drum, a rotating cylinder, okay, a rotating cylinder, okay, a huge rotating cylinder having a proper base on over here. Now this rotating drum in which a person is standing, let us say we have made Minu to stand over here, okay, with two ponies. Friends, Meenu, she's standing over here in this particular rotating drum. Yani, when darwaza khola hai, she's entering inside and she's standing or resting onto it. But what exactly? No, she's holding herself to the wall. She's keeping her arms apart from it and she is stuck to the wall. Yani, she's resting onto the wall, vertical wall. Okay. Now, what exactly we are trying to do? We are trying to rotate this particular drum. So I'm rotating this drum. Okay, this is the axis of rotation. And Meenu is revolving. Students, drum, students, ध्यान से सुनना, drum is performing rotational motion. Drum is performing rotational motion. What about Meenu? She's performing circular motion. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Yes, sir. She's standing inside, resting herself to the wall of the cylinder, but at the same time, she's resting on the base also. Now, my question to the students, with what angular velocity, with what minimum angular velocity the drum should be rotated? The drum should be rotated so that Meenu should not fall down in spite of we remove the base of the drum. समझ में आ रहा है? I want you to find out the minimum angular velocity with which this drum should rotate, such that if I remove the base, still Meenu should not fall vertically downward. That means Meenu should get stuck to the wall. I want to find out this minimum angular velocity. Is the question clear to all of you? Yes. Okay. Meenu, it's a question on to you. Come on now, answer. With what minimum angular velocity the rotating cylinder or drum should be rotated so that the object inside does not drop when the base is removed? Yes, anybody? Absolutely. I want to find an angular velocity. With what angular velocity the drum should be rotated? Of course, it's a question based on to circular motion. Okay, can I solve it for you all, students? Solve करूँ मैं? Students, shall I solve it? yes, yes, sir. Now the answer is no, students.
अगर मैंने बोला कि with what angular minimum angular velocity I need to rotate so that the object should not fall down instead of removing the base, तो तुम्हें क्या करना मालूम है? The person is not falling down, the base is removed. That means now there is no more base over here. There is no more base left, but still the person is not falling. Why is it so? तो तुरंत तुम्हें ये बोलना चाहिए सर, यानी ये अगर मीनू अगर नीचे गिर रही है तो शायद कोई फोर्स होगा उसको नीचे लेके आने के लिए, तो हो क्या सकता है सर, उसका खुद का वेट भी होगा ना, लेकिन मीनू नीचे नहीं गिर रही है एंड शी इज स्टक टू द वॉल, तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड हर, दैट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कहना ऐसे, ये जो ऑब्जेक्ट है वॉल के साथ में, ये जो ऑब्जेक्ट वॉल के साथ में, तो उसके साथ में ऑलरेडी दो फोर्सेस तो एक्ट हो गए, एक हुआ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और दूसरा हुआ फोर्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ स्टूडेंट्स, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes. That's why the person is not falling now. Students, why is it so the person is not falling? Because the weight in the downward direction is when balanced by the upward force, that's a friction. अगर by chance, ध्यान से सुना, अगर by chance friction कम हो जाता है, तो कहने से she's going to fall down because of the weight, and the friction has to balance in the direction opposite. क्या ये clear हुआ? Yes. दूसरी बात, when the cylinder is moving, not even she's coming inwards, not even she's coming towards the axis, not even she's going outwards. That means if I see over here, of course, when she's in contact with the wall of the container, which force is this? Well, so this is the normal reaction force because she's in contact with the wall of the container. What is the normal reaction force, students? A force which is directed perpendicularly from the surface passing through the center of gravity of the body. So normal reaction force, the normal reaction force is towards the axis. So n की वजह से the person should come inwards. लेकिन can I say the drum is moving with a certain velocity? Are you getting it? And its motion can be considered to be accelerated. So what about Meenu? She might be in a non-inertial frame of reference. If she's a non-inertial frame of reference, can I say there can be a force of centrifugal which can act onto her, equal in magnitude and opposite in direction to the normal reaction force. अभी देखो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, यानी एक तरफ तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, दूसरी तरफ तुम्हारा कौन सा है? फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, एंड फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, equal in magnitude, opposite in direction. Can I say these are the forces acting along x-axis? हाँ या ना? Yes, sir. ये positive x or negative x? Now can you see what happens to all the forces acting onto Meenu? Summation of all the forces acting onto her is equal to 0. 0. So can I say the body is in equilibrium? What kind of equilibrium she is having? She is at rest, but the entire cylinder is set to rotate. क्या ये clear हुआ students forces के बारे में? Students? Yes, sir. Everyone, please, I'm not explaining 2 or 3 students. Please, there are 31 in the group. I'm not explaining just 2 or 3. Yash from Khargar, 86A. Yash from Khargar, 89A. Are you getting it? Vadim, Sujit, Shreya. Shreya, what about you? Shrina, Sakshi, a very good cartoon it is. Nice one. Is it a Doraemon or something else? I don't know about it. Sakshi getting it? Rishi, Richa, Priya. Okay, here comes Krisha. What about you, Prapti? Are you there in the lectures, Prapti? There were 2 P's. Now see, Prapti went off. Yes, sir. No, sir, I'm there. यार क्या बात है, अभी आए हो प्राप्ति? सर कभी कभार 7:30 बजे से हूँ, अभी नहीं अरे आई मुझे हूँ। पता है, कभी होते कभी भाग जाती हो, 20 मिनट पहले भाग जाते हो। नहीं सर, कभी भी नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई। वेरी गुड, वेरी गुड। Om Panchal, are you getting it, Om Panchal? Yes, sir. Okay.
Neetu never replies. Menu, she replies. Neetu never replies. What about you, Krisha? The both the Jyotis don't reply. Jyoti and Jyoti Singh दोनों reply नहीं करते. Jay Bansode also doesn't reply. Harshada just now today. Dhruvi doesn't. Dhruv doesn't. Dia doesn't. Carol doesn't. Ayan Khan, is it clear? There are two Ayan. एक 50A है और एक 51A है. Avneet. There is Ayan Samir also. ये Ayan Samir कहाँ से आ गया? Oh my God, so many Ayans are there. क्या अलग-अलग ID से आया? Ayan Khan, Ayan Samir. Fine, doesn't matter. 3 IDs say if you still understand physics, I'm very happy. Students, please try to understand. Now we have two. अभी इसी का एक simple example. Students, let me put forward a simple example. Students, it's most of the times now the lectures are online in that case, and you are there all the time at home, है ना? At times तुम्हारी मामा ने भी तुम्हें चिल्ला के बोला होगा, अब बस पूरा दिन टीवी के साथ में फोन के साथ में बैठो, जाके वॉशिंग मशीन में से कपड़े लेके आओ, है ना? सुखाने मुझे निकालो जल्दी से. She must have told you in that case. और उसमें भी तुम नखरे करते हो, मामा बाद में जाती हो, ये करती हो, वो करता हूँ. But if you happen to go and remove it, students, तो तुम क्या देखते हो? वॉशिंग मशीन के अंदर जब ये कपड़े पूरे धुल जाते हैं तो उसके अंदर what do you see? Do you see the deposition of the clothes at the bottom, or do you see the clothes are stuck to the walls? Huh, students? Did you find that the clothes have stuck to the walls? Yes, sir. Yes, यानी sir. यही एक सेम एग्जाम्पल जैसे हमने मीनू को चिपका दिया था वहां पे, है ना? मीनू हंस मत, तू चिपक गई थी वहां पे. I getting it? Yes. So वैसे कपड़े भी चिपक गए थे. क्यों? क्योंकि अगर तुम वॉशिंग मशीन को देखोगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है. यानी तुम्हारे घर पे है वॉशिंग मशीन चल भी रहा है, कपड़े भी तुमने लिए होंगे इतने टाइम में, लेकिन कभी भी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन का फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है, और पूरा सर्कुलर मोशन चल रहा है इतने टाइम से चल रहा है, लेकिन किसी ने ये ऑब्जर्वेशन में भी नहीं किया. कपड़े उठाने के बोले बस उठा के लाके डंप कर दिया मम्मा के सामने, और बेचारी मम्मा सुखा रही है, हेल्प भी नहीं करते उनको. And so students, so much is physics there into your home, but you all are least bothered about it. You all don't think कि मैंने कपड़े लेने के टाइम पे कितना ऐसा फॉर्मली चिपक गया है. स्टूडेंट्स, एट टाइम्स तुम्हें ऐसा खींच के निकालना पड़ता है. ट्राई करना भी नेक्स्ट टाइम जब भी मामा जब भी कपड़े सुखाने के लिए मामा को निकालो, मामा को बोलो कि नहीं तुम मत निकालो, मैं निकालता हूँ, और फिर टेस्ट करना स्टूडेंट्स. उसमें से शायद हेवियर थोड़े से नीचे हो जाएंगे, लेकिन लाइटर वन तो बहुत ही चिपक गए होंगे, फॉर्मली चिपक गए होंगे, क्योंकि ड्रम जब भी रोटेट होता है स्टूडेंट्स, सो इट्स मोशन इज एक्सेलरेटेड, इट्स इन अ नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कपड़ा पूरा प्रेस हो जाता है स्टूडेंट्स वॉल के अंदर, और वो वॉल क्या है, इज परफोरेटेड विद होल्स. तो उसमें से क्या होता है, पानी बाहर जाता है. वाटर बीइंग स्टिल लाइटर as compared to clothes, the lighter particles have been thrown away, और वो पानी बाहर की तरफ आता है, वो ड्रम से बाहर चला जाता है, और वहां से पाइप से एग्जिट हो जाता है, तभी जाके पानी कपड़े को छोड़ देता है, and the clothes are dried. Are you getting students? क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. वैसे अगर सपोज तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बोला करके, और नो सपोज शी मेक्स कर्ड, अगर छाछ बनाती है, आई गेटिंग इट, तो क्या करती है, शी यूज अ चर्नर, या तो हाथ से करती है, या तो शी यूज अ मशीन, वो बॉश का मशीन शी इज यूजिंग इट. ओके, देयर इज अ स्पिंडल एट द बॉटम एंड शी इज स्विचिंग इट ऑन, और वो रोटेट होता है. तो अगर तुम देखोगे तो छाछ बनाने का अगर तुम देखोगे तो वो जो रॉड होता है वहां पे मक्खन जमा होता है, मक्खन वहां पे होगा स्टूडेंट्स, एक्सिस के यहाँ पे होगा हेवियर पार्टिकल, लेकिन द बटन मिल्क है, छाछ है, वो लाइटर है, दैट हैज बीन थ्रोन अवे. You're getting it? So that is an example of centrifugal forces, students. Lighter particles have been thrown away. Now taking this, can I get an angular velocity? Why not? हम क्या करेंगे अभी, फोर्सेस को इक्वेट करेंगे. What is the first force? The force of static friction is equal to mg. Force of static friction is equal to mu s into n is equal to mg. Agreed? Now यहाँ पे तुम्हारा normal reaction force किससे बैलेंस कर रहा है? Force of centripetal, which is equal in magnitude in opposite direction to centrifugal. तो mu s, what exactly, n को मैं क्या लिखूंगा, m
डू आई नीड ओमेगा? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? mr ओमेगा स्क्वायर. Since the normal reaction force is equal to force of centrifugal, इसके तीन formulas है. Yeah, I can say it equal to centripetal, तीन formulas है. Which are the three formulas? mv square by r, mr omega square, m into v into omega. अब यहाँ पे मैं कौन सा यूज करूंगा स्टूडेंट्स? Which one should I go for it? तो बोलोगे सर आपको ओमेगा चाहिए, क्या चाहिए? ओमेगा. So of course I'm going to go for this. R is the radius of the cylinder. तो मैंने n को क्या सब्स्टिट्यूट किया है सर? n को मैंने फोर्स ऑफ सेंटीमीटर ले लिया and that is equal to mg. m will get cancel. मुझे क्या चाहिए था? ओमेगा चाहिए था. So what is omega? Under root g upon mu s into r. And this answer will be in radian per second. So with what minimum angular velocity the rotating drum should rotate? Under root g upon mu r. G is acceleration to gravity. Mu is coefficient of friction, which is always less than 1. R is the radius of the circular path. Is this clear, students? Students, क्या ये clear हुआ? Sir. Yes, आप sir. बोलोगे Sir, but why didn't we take the third formula, mv omega? क्योंकि मुझे v थोड़ी चाहिए. मुझे v यहाँ पे कहाँ से गया? मुझे ओमेगा पूछा है, तो v की क्या जरूरत है मेरे को? मेरे को v देते. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, तुम लोग एक सेकंड, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना. अभी मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जब भी तुम्हें कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चलो ये मैंने क्वेश्चन दिया, गौरी यू ओनली टेल मी. मैंने बोला कि एक रोटेटिंग ड्रम है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होल्ड करके रख रहा है और मैं बेस निकाल देता तो ऑब्जेक्ट गिरता नहीं है. एग्रीड? और मैंने पूछा है ओमेगा को फाइंड आउट करना. अभी तुम मुझे बताओ गौरी, यू आर अ पेपर सेटर, तुम्हें बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज तुम डेटा में दोगे तुम्हारे हिसाब से? तुम्हें यहाँ पे डेटा में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज तुम देना चाहोगे स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए? ओमेगा पूछा गया बस, और रोटेटिंग ड्रम है. Sir, the mass of the body. मास ऑफ द बॉडी और जो तुम्हें सामने दिखाई देता है ना, जो फैक्ट, और तुम मेजरेबल क्वांटिटीज दोगे ना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना? Yes, sir. एंड द बॉडी स्टफ, तो वॉल और बॉडी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बस. और क्या दे सकते हो तुम? So see the quantities you can give it, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं दे सकते हो. तुम v तो दे ही नहीं सकते हो, तो why should I go for formula v? जब v पता ही नहीं है मुझे और v पूछा भी नहीं है मुझे, तो why should I go for this? I will go for this. यानी प्रॉब्लम्स को समझो. जब भी कोई प्रॉब्लम सामने थ्रो करता है, तो प्रॉब्लम को जब भी तुम रीड करते हो तो तुम्हें पता चलने चाहिए कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज देते हैं वो. जो तुम्हारे सामने जो क्वांटिटीज होती है वो सामने दिखाई देनी चाहिए. चलो वो घूम रहा है तो ये मुझे नहीं पता, ओमेगा मुझे पता ही नहीं है, ओमेगा दे भी नहीं सकते हैं हमें, लेकिन पूछा गया है. लेकिन दे क्या सकते हैं? हाँ, तुमने बोला सर इसका मास दे सकते हैं बॉडी का, कि कितने कितने वजन का है. दूसरा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. हाँ सर, वो एक ऑब्जेक्ट है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसका रेडियस फाइन. एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द टू. और अगर सपोज मैंने फ्रिक्शन पूछा होता तो ओमेगा देते, ओमेगा पूछा तो फ्रिक्शन देंगे. इसके बियॉन्ड वो क्वांटिटीज देंगे नहीं. दैट्स व्हाई माय आंसर विल बी mr ओमेगा स्क्वायर. आई कांट गो फॉर दिस बिकॉज़ दे डिडंट आस्क यू v. They ask you angular velocity of the rotating drum, and angular velocity is a angular term. If the drum is moving in anti-clockwise direction, Gauri, look at my hand. The drum is moving in anti-clockwise direction. Where is my thumb pointing? Upwards. Z-axis, perpendicular plane. That is omega. V2 is acting tangential, which is not asked. Clear हुआ Gauri? Yes, sir. Now can I erase the students? Yes, sir. Let us students see one question, just one question, and so many things are spoken on.
और ये एक क्वेश्चन करने से इतनी सारी चीजें आती है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएगा. This is what physics is. It's not like that. You can't expect students, you can't expect a teacher to do all problems in physics. Students don't think in that manner. There are certain students who will say, Mama, this is only done, this is not done. They didn't do these problems, they were doing those problem and that problem. These means concepts are thrown. This is how the studies goes. अगर सारे प्रॉब्लम्स टीचर्स करने बैठ जाए ना स्टूडेंट्स, ये पूरा कोर्स 3-3.5 साल का हो जाता है. समझ में आ रहा? इतना वास्ट है ये. So somewhere or the other, you need to use your intelligence into this, your dedication, your devotion. And for that, you should be really strong in your lower standards, 8th, 9th and 10th का physics और maths. जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स और मैथ्स के लिए बहुत उनका स्ट्रेंथ चाहिए लोअर स्टैंडर्ड्स में. लोअर स्टैंडर्ड्स में तुम अगर सोचो कुछ फाउंडेशन कोर्सेज करते हो along with your school studies के अलावा कुछ extras, that will really help you out for such kind of studies. Even for NEET students who want to go for it, if they are still doing physics properly, followed by maths also strongly, along with bio and chemistry. Students, you won't believe there are students who are doing NEET, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर तक वो नीट की एग्जाम्स अभी दे रहे हैं. एंड दे आर ऑल स्मार्ट गाइज, स्मार्ट गर्ल्स आल्सो. लास्ट ईयर अक्टूबर तक उन्होंने मैथ्स को पकड़ के रखा था, फिर मैथ्स को छोड़ दिया. स्टूडेंट्स, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, जाना है उनको मेडिकल के लिए, लेकिन मैथ्स को क्यों पकड़ के रखा है? सो दैट उनका फिजिक्स स्ट्रांग हो और उनका केमिस्ट्री पार्ट ऑफ इट स्ट्रांग हो. इसलिए वो पकड़ के रखते हैं मैथ्स को, वो छोड़ नहीं देते मैथ्स को. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट करना है, यानी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और फिर जब भी फिजिक्स के अंदर मार्क्स कम आते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं. लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मैंने खुद हाथ से मैंने मैथ्स को छोड़ दिया है. मैथ्स को भले कोई टीचर ना बोले भाई यू आर गोइंग फॉर नीट, यू शुड नॉट डू इट, फाइन, डजंट मैटर, बट एटलीस्ट व्हेन यू डिड बेसिक मैथ्स, स्टूडेंट्स, यू डिड कैलकुलस, यू डिड बेसिक मैथ्स, सो मच इज मैथ्स इन्वॉल्वड इन फिजिक्स, यू नो दैट. जेई स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है, क्योंकि जेई स्टूडेंट्स अभी और मैथ्स अच्छी तरह से करेंगे एसपीएम सर के साथ में, सौरभ प्रियदर्शनी के साथ में, या डिफरेंट टीचर्स के साथ में. तुम्हारा मैथ्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा और बेटर होने वाला है. फिर देखो तुम्हारे जो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स है और तुम कैलकुलस के प्रॉब्लम लाइक दैट, तुम्हें जब भी कैलकुलस खोलोगे ना, आफ्टर 3 months और 4 months डाउन द लाइन, ये मॉड्यूल खोलना, तुम बोलोगे, तुम हंसोगे फिर ये प्रॉब्लम्स के ऊपर. उस टाइम पे 3 महीने 4 महीने के बाद क्या प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग, तो सारे बचकान प्रॉब्लम्स है. लेकिन किसको लगे कि जेई स्टूडेंट्स को लगे, क्योंकि उतना मैथ्स उन्होंने इन डेप्थ किया है. लेकिन न्यू स्टूडेंट्स, दे रन अवे फ्रॉम मैथ्स. That's what I'm telling you. Those students who are going for medical, please do not run away from maths. Do not run away from your calculus part of it. Still be consistently doing calculus. Still go on referring all the formulas of maths from calculus. Go on solving problems from the module. उसको छोड़ो मत. भले तुम 7th या 8th या 9th chapter physics में हो, तो it will be a great problem for you all. Okay, students. The next one, when you consider here, now we go for the next part of it, students. Suppose if in case if I happen to go for, I need to find out the formula for students maximum velocity for a car on a circular unbanked road. Since can you give me the relation for maximum velocity for a car on a circular unbanked road we consider? So now we need to go for this mathematical relation. Think as if this is a circular path, students. Okay, ये है तुम्हारा center of the circular path, and if I say the car is over here, okay, this is the center, and this becomes your position vector, students. Okay, shows the instantaneous position of the car.
The car is performing circular motions. Okay, it's performing circular motion. I need to find out the maximum velocity for a car on a circular unbanked road. Now, when I speak about the car, students, okay, when I speak about the car, students, the car is moving on a circular road. अगर तुम circular road के ऊपर car को move करते हो, students, तो ये तुम्हारा circular road है. Okay, so I'll show the car in this manner. Think as if students, ये जो car है, उसका तुम पीछे का portion देखो, students, back portion of the car. Hope that you understand the diagram of my students. Okay. मैं सिर्फ पीछे का portion draw कर रहा हूँ, students. Okay. This is the back portion of the car, students. And the car is performing circular motion in this manner. ये कार यहाँ पे मुझे ड्रॉ करनी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने कार को बस एक पॉइंट मास ले लिया है, लेकिन कार अभी तुम्हारी ऐसे जा रही है. स्टूडेंट्स, ये बैक पोर्शन है, समझ में आ रहा है? ये पीछे वाला, ये रोड सरफेस है तुम्हारा. मैं गेटिंग इट? ये तुम्हारा इनर व्हील है. अगर ऐसे जा रहे हो स्टूडेंट, तो ये कौन सा होगा? इनर व्हील, है ना? और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? आउटर व्हील. Okay. Now, students, I want to find out the maximum speed of a car on a circular unbanked road. What exactly mean by the term unbanked road? Plain surface. Students, the word unbanked का मतलब surface is plain. Unbanked का मतलब surface is plain. मुझे चाहिए formula for V max. Anybody? Yes, anyone? Yes, students, anyone? Please for engine. I want to find out a maximum speed of a car on a circular. Now, students, अगर मुझे maximum speed है, तो इसको मैंने दिया क्या है? R. अभी यहाँ पे मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी बॉडी, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर्कुलर मोशन में? अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है ना, तो उसको कौन सा फोर्स की जरूरत होती है स्टूडेंट्स? Do you need a pseudo force for it or do you need a real force? Real force. Real force. और रियल फोर्स यानी कौन सा फोर्स चाहिए? Centripetal. आया ना? सर्कुलर मोशन के लिए कॉस क्या होना चाहिए? रियल फोर्स. रियल फोर्स यानी फोर्स सेंटीपिटल. हाँ स्टूडेंट्स? Yes. और फोर्स सेंटीपिटल होता क्या है? जिसका ओरिजिन होना चाहिए और सोर्स होना चाहिए. तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे, यानी जब भी कोई क्वेश्चन थ्रो करता है तो सबसे पहले तुम्हारा इसी पे कंसंट्रेशन आना चाहिए कि अगर ये कार मूव हो रही है भाई, तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कार की, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये होगा तुम्हारा फोर्स सेंट्रीपिटल. तुम्हारा जो पोजीशन वेक्टर है वो तो फ्रॉम द सेंटर
shows the instantaneous position of the car. ये हुआ तुम्हारा पोजीशन वेक्टर और ये तुम्हारा फोर्स सेंटीपिटल। लेकिन मुझे बताओ फोर्स सेंटीपिटल कौन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स सेंटीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स सेंटीपिटल किसके अंदर आता है स्टूडेंट? ध्यान से सुनना। रियल फोर्स किसके अंदर आता है? रियल। और रियल फोर्स का मैंने क्लासिफिकेशन क्या दिया था? या तुम लोग ने लॉस ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था? हाँ स्टूडेंट्स, रियल फोर्सेस के क्लासिफिकेशन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। यानी अगर तुम्हें यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, ध्यान से सुनना, ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। हाँ या ना? दोनों में से यस। कोई भी टाइप का हो सकता है। लेकिन अभी तुम सोचो, मुझे सर कंजर्वेटिव फोर्सेस तो नॉन कॉन्टैक्ट होगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस यहाँ पे कैसे आएगा भाई? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो ये मैं बता सकता हूँ सर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो ये हो सकता है कि अगर मून लिया है और मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो वो होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हाँ या ना? नॉन कॉन्टैक्ट हुआ कि नहीं? कॉज कंजर्वेटिव फोर्स। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? यस। Yes, sir. All Yes, the sir. students, not 2 or 3, please, all the students inside the group. Again, there is a silence. See, hardly 3 students have replied. The rest of the students. Yes, sir. Understood. Yes, sir, understood. Okay. और अगर दूसरा मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैंने मून लिया, सपोज अगर मैं बोला इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो ये क्या होगा सर? यहाँ पे भी हमें फोर्स सेंटीपिटल चाहिए, वो एक रियल फोर्स होगा। लेकिन रियल फोर्स सर यहाँ पे हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव लेंगे, हम कंजर्वेटिव फोर्स लेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कंसिडर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ पे। यस, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अगर मैंने एग्जांपल दिया है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट होगा। इसमें मुझे बताओ कॉन्टैक्ट में कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? तुरंत तुम बोले सर फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो कार सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रही है ना, और ये कार को जो सरफेस से होल्ड करके रखता है, दैट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इन कांटेक्ट। अभी सोचो, ये तुम्हारी कार सर्कुलर मोशन में जा रही है स्टूडेंट्स, कार इज गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन। ना सपोज भाई से थोड़ा सा आगे, इसी रोड पे थोड़ा सा आगे देयर इज ऑयल, ऑयल पड़ा हुआ है। तो मुझे बताओ, क्या ये कार सर्कुलर मोशन में आगे जाएगी या विल गो स्किड? विल द कार विल स्किड? विल इट गो टेंजेंशियली आउटवर्ड्स? टेंजेंशियल। है ना, टेंजेंशियली बाहर जाएगी ना। तो कार सर्कुलर मोशन कर रही है और थोड़ी दूरी के ऊपर मैंने बोला कि वहां पे ऑयल पड़ा हुआ है, तो कार स्किड हो जाएगी, फ्रिक्शन को। यानी पहले वो कार सर्कुलर मोशन कर रही थी, किसकी वजह से कर रही थी? फ्रिक्शन की वजह से कर रही थी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी फ्रिक्शन इज द कॉज, फ्रिक्शन इज द कॉज in order to make the car to run on a circular track. समझ में आ रहा है? तो वो कौन सा फोर्स होगा सब? वो तुम्हारा रियल फोर्स होगा, फोर्स सेंटीपिटल। यानी तुम्हारा फोर्स सेंटीपिटल इज प्रोवाइडेड बाय व्हिच फोर्स? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, which holds a car all the time when the car is performing circular motion. अब बाई चांस तुम्हारा रोड एकदम सही है, प्लीज स्टूडेंट्स, circular road is very proper, there is no problem in the road, but not if the tires of the car only are not fine. You are trying to drive a car which is 7 years down the line. 7 साल पुरानी कार है, have you seen? स्टूडेंट्स, उसके टायर्स देखे टकले हो गए रहते हैं। अगर तुम कोई टैक्सी देखते हो स्टूडेंट्स रोड के ऊपर, जो 6 साल 7 साल पुरानी है, उनके टायर्स देखे स्टूडेंट्स? देयर आर नो ग्रूव्स ऑन टू इट। वो वाली कार्स हमेशा स्किड होंगी, वो एक्सीडेंट्स करती है। लेकिन उसी के नजदीक अगर न्यू ब्रांड कार तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो हैव यू सीन द टायर्स एंड द ग्रूव्स that will hold the car firmly onto the road? So what is the cause for the car to perform circular motion? You can say cause for car to perform UCM. I'm saying it because it's going with a constant speed. Let us say it goes with a constant speed because I want a certain maximum speed. Is force of static friction, and that is your force of centripetal.
So now if I equate it, force of static friction is equal to μs into n, which is equal to what? Force of centripetal will be equal to what? I want V. स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कितने फॉर्मूलाज है? 3 फॉर्मूलाज है स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल के. वापस देखो, mr ओमेगा स्क्वायर m इंटू वी इंटू ओमेगा mv स्क्वायर बाय r. अभी कौन सा लोगे यहाँ पे? तुम्हें v पूछा है, रेडियस दिया है, तो ये लोगे. एंड मास ऑफ द कार इज नोन टू यू, है ना स्टूडेंट्स? तो तीनों में से तुम कौन सा सिलेक्ट करोगे? mv स्क्वायर बाय r. And when you look at the car, students, what are the forces acting? So the weight of the car is acting downwards, and the normal reaction force is acting upwards. Agreed? So μs into n is equal to mv square by r. क्या ये equation clear हुआ students? Yes, sir. Cancel it. Now what exactly? N will be equal to m into g is equal to mv square by r. Mass of the car will get cancelled. What exactly? V is equal to under root mu r g. That's the formula for velocity of a car on a circular unbanked road. Agreed? Sir, this in chat. Pardon? I wrote this in chat. Oh, when did you put down this formula? Sir, before the time you were explaining non-contact forces and that. Okay, very good. देखो उसने उसी टाइम पे उसने पकड़ लिया. जब इसको समझ में आया कि कौन सा होना चाहिए cause for it to move, he picked up and he solved it. So this is how you have to connect yourself with the concept and the problem. किसकी वजह से हो रहा है? तो that is because of this Vmax. तभी जाके स्टूडेंट्स अगर तुम देखोगे ना, रोड्स के ऊपर एक स्पीड लिमिट लिखी होती है. स्टूडेंट्स क्यों लिखते हैं भाई? Have you seen? Suppose if you try to move towards Lonavala, somewhere you must have gone by road, or if you happen to go for, suppose if you are going towards north, suppose अगर तुम गुजरात की तरफ जाते हो, राजस्थान की तरफ जाते हो, दिल्ली की तरफ, तो तुम suppose बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स लेन्स होती है सारी, और वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी होती है. तुम्हें कार को उसके वही स्पीड से तुम्हें चलानी है, तो तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड है स्टूडेंट्स. मैक्सिमम स्पीड फॉर योर कार टू कवर द जर्नी इन दैट पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ. अगर वो पाथ सर्कुलर है तो मैक्सिमम स्पीड होगी. अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो, म्यू स्टूडेंट्स, म्यू फॉर द सरफेस एंड द टायर्स आर कांटेक्ट. सपोज अगर मैंने 3 कार ली स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन 3 कार्स. ओके, लेन 1, लेन 2, लेन 3, ऑल 3 आर सर्कुलर ट्रैक्स. तीनों मैंने सेम कार ली है, तो तीनों सेम कार है, सेम मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, एवरीथिंग, तो टायर्स तीनों के सेम होंगे, रोड भी सेम है, तो म्यू तो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा. किसकी रेडियस ज्यादा है? अगर मैं ये सेंटर लेते तो कहने से ये रेडियस कम है, ये रेडियस इससे ज्यादा, ये रेडियस इससे ज्यादा. आया ना? हाँ स्टूडेंट्स, कौन सी रेडियस सबसे ज्यादा है? थर्ड वाली. तो मुझे बताओ, ये थर्ड वाली लेन के लिए स्पीड लिमिट कम होगी? नहीं. अगर इसकी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर होगी, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर, ये 120 किलोमीटर पर आवर. तभी जाके स्टूडेंट्स हम ओवरटेक कहाँ से करते हैं इंडिया में? ओवरटेक कहाँ से करते हैं? राइट से करते हैं. कभी भी तुमने किसी भी रोड के ऊपर जब भी तुम जाते हो, भले ऑटो रिक्शा में, तुम्हारी कार में, हैव यू सीन पीपल ओवरटेकिंग फ्रॉम लेफ्ट? हाँ, वो इंडिया में होता है, लेकिन लेफ्ट से कभी भी ओवरटेक नहीं करते, वो गलत है. जो व्हीकल ड्राइवर ने लेफ्ट से ओवरटेक किया, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आगे जाके अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना है या ड्राइविंग के बारे में भी सीखना है, तो अगर कभी भी बाय चांस तुमने लेफ्ट से ओवरटेक किया ओवर स्मार्टनेस में, और बाय चांस तुमने माइल्ड सा एक्सीडेंट भी कर दिया जिसमें कुछ नुकसान भी नहीं है, फिर भी तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट फॉल्ट. You can't overtake any vehicle from the left hand side. All cars in India are right hand drive. तो तुम्हें ओवरटेक करना है राइट हैंड साइड से. और सिंपल बात, अगर रेडियस बढ़ती है तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी. अगर रेडियस बढ़ती है और द सर्कुलर ट्रैक, तो स्पीड भी बढ़ेगी. तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए. जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो ये वेलोसिटी यानी ओवरटेक, यानी तुम्हें ओवरटेक, सपोज अगर 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 तीनों का रेस लग रहा है स्टूडेंट्स, तुम अंदर वाली कार की तरफ हो, तुम्हें ये कार 2 को ओवरटेक करना है,
तो तुम्हें 80 से कहां तक जंप करना है? 120। अब एक ठीक है सिंपल एग्जांपल, सुन ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। यू आर इन अ कार विद योर डैड and your car is in lane 1. Everybody listen carefully. The car is in lane 1 and your dad is driving with 80 kilometers per hour and is going with a constant speed in the same lane. You tell your dad कि dad आप 80 से स्पीड बढ़ाओ ना, लेकिन लेन चेंज मत करना। आप 80 से स्पीड बढ़ाना शुरू करो, 80 से 85, 85 टू 90, 90 टू 95, 95 टू 100 की तरफ लेके जाओ, लेकिन आप स्टीयरिंग व्हील को बराबर पकड़ के रखना, आप लेन चेंज मत करना। He'll say, fine, let us go ahead with it. Ask this question to your dad. If your dad is driving quite regularly, he will surely tell you, are you not? This is a weird question you're asking. ये possible हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी तुम फोर्स करोगे ना तुम्हारे डैड को, लेन 1 का स्पीड लिमिट 80 है, तुमने मैक्सिमम से गया है, अभी तुम क्या कर रहे हो मालूम है? उसी लेन पे रेडियस में, नाउ यू आर फोर्सिंग योर डैड टू गो विद द स्पीड ग्रेटर देन V max फॉर द सेम रेडियस। What is going to happen? Students, your dad might take, अगर तुम्हें डैड को प्रॉपर ड्राइविंग नहीं आती होगी तो he might take it. He might reach from 80 to 85, 89, 9, लेकिन जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ाएगा, he might get a screechy sound between the tires and the surface. At the same time, you will see the steering wheel will start wobbling. यानी वो कार को जबरदस्ती उस लेन में होल्ड करके रख रहा है। कार अभी भी वो लेन में मूव हो रही है और टायर्स फ्रिक्शन की वजह से वो अभी भी कांटेक्ट में है। अगर बाय चांस तुमने 90 से ऊपर लेके गए तो वो कार बोलेगी भाई, अभी टायर्स बोलेंगे भाई अभी मैं जवाबदार नहीं रहूंगा, अभी मैं होल्ड नहीं कर सकूंगा। अगर तुमने और स्पीड बढ़ा दी तो या तो मैं फट जाऊंगा या तो मैं पलटी खा जाऊंगा। क्यों? कि जैसे तुम ये लेन में रहते हो और तुम स्पीड बढ़ा तो होता क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द इनर टायर, दिस इज द आउटर टायर। What happens when you try to go with a speed greater than that, students? Your inner tire has less normal reaction force as compared to outer. Students, ये inner vehicle का normal reaction force है और ये outer tire का है। समझ में आया ना? यानी अगर तुमने स्पीड बढ़ा दी स्टूडेंट्स तो तुम्हारा अंदर वाला टायर ऐसे बाउंस होना शुरू करेगा और जैसे स्पीड बढ़ेगी एक टाइम पे इतना बाउंस करेगा कि तुम्हारी कार क्या होगी, पूरी कार ऐसे रोल होकर बाहर की तरफ चली जाएगी। नाउ थिंक अबाउट, हैव यू एवर सीन Formula 1 रेस कार्स? कभी देखा तुमने Formula 1 रेस कार्स? Yes, sir. वो लैप्स में जाते हैं, have you seen when they turn the laps, when the number of laps which they are going is how many, you know students, 14 laps, 18 laps, वो उनका लैप्स है और लैप्स के अंदर सर्कुलर पाथ आता है। और अगर बाय चांस उस बंदे ने उसी रेडियस के अंदर स्पीड बढ़ाया तो डोंट यू थिंक सो इट गोस पलटिंग, जैसे हवा में उड़ के बाहर की तरफ जाती है टुवर्ड्स द फेंसिंग, कभी भी अंदर नहीं आती है, इट गोस आउटवर्ड्स because the inner will always get a less reaction forces compared to outer one and the car goes toppling outside. So what is the maximum speed is V max, VRT. अगर तुमने स्पीड बढ़ा दी फ्रेंड्स, अगर तुमने स्पीड बढ़ा दी your car will demand to go on the outer track. अगर तुमने स्पीड कम कर दी your car will demand to come on the inner track. तो स्पीड बनाने से हुआ क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम पहुंच गए हो, सेंट्रीफ्यूगल एक्ट होगा और जब भी तुम स्पीड कम करोगे तो there'll be automatically centripetal force which is trying to call you back into the radius. तो जब भी स्टूडेंट्स तुम्हारी स्पीड बढ़ानी हो तो तुम आउटर साइड से बढ़ाना, ओवरटेक राइट हैंड साइड से करना। You can't go beyond a certain permissible speed, students. Friction can hold. Answer सुना students. Friction can hold the car. Friction can hold the car, but friction cannot be dependent all times. Students, you can't depend on friction all time. तुम सर्कुलर ट्रैक में जा रहे हो, तुम्हारे टायर सही है, लेकिन क्या भरोसा आगे आगे ऑयल पड़ा हुआ है। Are you getting it? Who knows? You can't depend on the mu all the time. That is why
That is why, students, the safest speed for a car to move on a circular unbanked road will be always under root V max. And देखो students, जब भी तुम multiple choice question करो तो read करना. Is the question asked for safe speed? Is the question asked for the speed to topple? यहाँ पे ये topple हो जाएगी और यहाँ पे maximum. यानी maximum speed is 100 µ/g. यहाँ तक तुम जा सकते हो. Safe उससे कम. जब भी तुम topple वगैरह कुछ नहीं होगे. लेकिन अगर स्पीड बढ़ा दी तो तुम्हारी कार पलटी करेगी. और टॉपल किस तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा. क्यों बाहर की तरफ होगा? क्योंकि इनर व्हील हैज लेस normal reactive forces compared to outer. Is this clear, students? Yes. So, Yes. so what would be the minimum speed of the car so that it does not fall radially inwards? Minimum speed of the car, it should be equal to the radius. Okay, if I have to consider µ/g, that's what it is. That's a minimum speed. उससे just less than that. You can't go still there. अगर उससे तुम और कम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? कार तो रुकी जाएगी ना. You need to be in motion. है ना? And it depends on the width of the road. अगर तुमने और मिनिमम स्पीड की तो रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन रेडियस कम ही नहीं है. उसके बाद में तो रोड ही नहीं है, तो कहाँ से तुम नीचे जाओगे? है ना? तो सिविल इंजीनियर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे उतना विड्थ तो तुम उस विड्थ में रहो. उस विड्थ में रहो यानी तुम्हें एक कांस्टेंट रेडियस दे दिया. एक कांस्टेंट रेडियस दे दिया तो कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई. हाँ, फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि भाई तुम वो स्पीड से जा रहे हो या उससे कम जा रहे हो. उससे कम जा रहे हो तुम रोड से नीचे आ गए. उससे ज्यादा जाओगे तो रोड से बाहर चले गए. गेटिंग इट? Yes, sir. सोचो, हाउ डू सिविल इंजीनियर्स आर वर्किंग? दिस इज सिविल इंजीनियरिंग. दे वर्क इन दिस मैनर. फ्रेंड्स, क्या ये क्लियर हुआ? हाँ Yes, स्टूडेंट्स. Sujit, is it clear with you, Sujit? Sakshi, is it clear with you, Sakshi? Sujit, Sakshi, clear? No reply. Rishi, what about you, Rishi? Is it clear? Yes, sir. Okay, fine. Can I erase it? मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? Yes. So students, ये ध्यान में रखना है, ये सारे non-contact forces हैं, which are responsible for the earth to move. अगर कभी भी किसने पूछा for earth to move around the sun, which forces require? Gravitational force of the sun. For moon to revolve around the earth, gravitational force of the earth. For electron to revolve around the nucleus, electrostatic force between the nucleus and the electron. ये ध्यान में रखना students. Satellites revolving around the earth, gravitational force of the earth. ये सारे non-contact forces हैं, conservative forces. और बाकी सारे cases में contact forces आ जाएंगे. So now if somebody asks you, what is the maximum velocity of a car on a circular unbanked road? Then your formula will be under root µ/g, where mu is the coefficient of static friction between the surface and the tires. R is the radius of the circular path. G is gravitational acceleration. If the radius of the circular path increases, velocity will certainly increase. The wheels of the inner wheels of the tire experiences less reaction force as compared to that of the outer. Do keep this in mind, students. But at the same time, students, mu cannot be dependent. You can't depend on to mu. Mu trustworthy नहीं है. Okay, हम mu को trust नहीं करते, students. Are you getting it? You can't trust mu. Mu Yes, cannot be. Okay. Now let us go for the next concept. That's why I'm picking up a concept, students, related to a concept of banking of roads. अभी ध्यान से सुनो, what is banking of roads? Okay. I want to first go for formula to derive its maximum velocity of a car on a circular banked road. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने वर्ड यूज किया banked road. पहले क्या था? Unbanked road यानी plain surface. स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुना. To understand this,
first I need to know what do you mean by the term banking of road, students. तो हम वापस मैं ये रोड बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, वही डायग्राम, एग्जैक्टली सेम डायग्राम. ये तुम्हारा सेंटर है स्टूडेंट्स ऑफ सर्कुलर पाथ. ओके, दिस इज व्हाट द सर्फेस आई विल कंसीडर इन दिस केस. ओके, ये तुम्हारा रोड है और ये सर्कुलर रोड है. Students, listen carefully. Think as if this is position A जहाँ पे तुम मोशन को स्टार्ट कर रहे हो. एग्रीड? और तुम्हारा डेस्टिनेशन इज पॉइंट B. ओके, तुम्हें पॉइंट A से B की तरफ जा रहा है और ये सर्कुलर रोड है जो अनबैंक्ड है. Are you getting it? Now the length of the road is same throughout. I mean, the length of the road is in few kilometers, students. The length of the road is in few kilometers. Okay, few kilometers is a long stretch. Kilometers में students. तो अगर तुम इसकी स्पीड से जाओगे, कौन सी स्पीड से जाओगे? V is equal to under root mu r g की स्पीड से जाओगे, है ना? So the time taken for you to reach the destination might be 2 hours. सोचो कि हम 2 घंटे में पहुंचेंगे. आया ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? Time taken to reach that particular destination is 2 hours. तुम 2 घंटे में पहुंचोगे if you run with the speed. लेकिन अभी all of a sudden अचानक one night you get a call from the destination, okay, your family friend, and they need an emergency, and you start your car from point A to reach at point B. तुम्हें पता है कि 2 घंटा लगेंगे with Vmax. तो मुझे बताओ, are you a fool? Are you a fool to run your vehicle with a velocity greater than Vmax? हाँ स्टूडेंट्स, तो उनको हेल्प करने की जगह पे तुम्हें रास्ते में कहीं हेल्प चाहिए होगी. समझ में आ रहा है? तुमने मैक्सिमम स्पीड से अगर जाना शुरू करोगे यहाँ पे पहुंचने के लिए तो तुम 2 घंटे लगाओगे. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक रात को B से फोन आया कि भाई तुम्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी आओ. तो तुम जल्दी पहुंचने के लिए तुम टाइम कम करोगे, है ना? डिस्टेंस तो उतना ही है. अगर टाइम कम करोगे, सिंपल रिलेशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस तो कांस्टेंट है. अगर तुमने टाइम 2 घंटे से कम लेना है तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी कार की स्पीड बढ़ाओगे. और अगर तुम्हारी कार की स्पीड बढ़ गई ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू आर जी, तो होगा क्या? तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, हाँ या sir. ना? तो अभी Yes, sir. अभी यही क्वेश्चन सिविल इंजीनियर्स को पूछा गया. सिविल इंजीनियर्स को पूछा गया कि भाई हमें अभी कम टाइम में यहाँ पे पहुंचना है, हमें कम टाइम में पहुंचना है, तुम्हें रोड दिया गया है, अभी तुम ये रोड के साथ में क्या खिलवाड़ करोगे? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू डू विद दिस पर्टिकुलर रोड? यू कांट इंक्रीज द विड्थ ऑफ द रोड. You can't go for a shortened distance in that case. You can't do any kind of demolition nearby. But you can just do some fidgeting with this particular width of the road. That's all you can do, nothing else. The length remains the same throughout. But still, I want to reach in less time. तो तुरंत तुम्हारा दिमाग कहाँ पे जाएगा? तुम लोग तुरंत तुम बोलोगे सर आपने बोला था कि अगर मेरा वेलोसिटी इससे ज्यादा हुआ तो मेरी गाड़ी टॉपल होगी, क्योंकि मुझे कम टाइम में जाना, तो स्पीड तो बढ़ाना ही होगा किसी भी यान में. लेकिन आपने ये बोला कि जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, मेरा ये कार का इनर व्हील है और ये आउटर व्हील है, तो डोंट यू थिंक सो? आपने बोला था सर ये इनर व्हील बाउंस हो रहा है ना, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये तो फॉर्मली कॉन्टैक्ट में, लेकिन ये बाउंस होता रहेगा. और जैसे तुम्हारी स्पीड लिमिट Vmax से ग्रेटर होगी, वो बाउंस इतना हो जाएगा कि गाड़ी फिर पूरी पलटी होकर बाहर चली जाएगी. हाँ या ना? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. तो सर ऐसा करते हैं ना, आपको कम टाइम में वहां पे पहुंचना है ना, तो सर ऐसा करते हैं ना, जो हमारा जो अंदर का व्हील जो बाउंस हो रहा था और वो कम कांटेक्ट में आ रहा था, क्या किसी भी हाल में उसको हम ज्यादा कांटेक्ट में लेके आ सकते हैं? कैसे है? अरे सर ऐसा करते हैं ना, ये जो आउटर एज ऑफ द रोड है इसको हम थोड़ा सा उठा लेते हैं. विड्थ तो वही रखेंगे, लेकिन बाहर के रोड को थोड़ा सा मैंने उठा दिया
as compared to inner, as compared to inner, as compared to inner, as compared to inner. So can I say I'm going for banking? I'm going for banking. I've gone for banking. तो मैंने क्या किया, देखो रोड को बैंक कर दिया. I've banked. I've banked. क्या देखो अभी स्लोप जैसा लग रहा है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, this is called banking of roads. So what is banking of roads? For the same width, students, the width of the road is same. Width is constant. I'm not changing, I'm not fidgeting the width. What am I trying to do? Sir, you have just tried to increase the outer end of the road as compared to the inner one. That means outer end of road is raised in comparison to inner at a height h, which is very small. And this angle so formed is called angle of banking. And this angle of banking is very small. It can be less than 10 degrees. When you're solving problems, students, ideally you go for less than 10 degrees. When you're solving problems, you might come across 8 degrees, 6 degrees, 10 degrees, 12 degrees, 14 degrees. At times, they might give you 30 degrees also problems can so they can put forward. Angle of banking. तो अभी होगा क्या? अभी होगा क्या? हाँ सर, अभी सही होगा. स्टूडेंट्स ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये तुम्हारा रोड सरफेस था पहले प्लेन, है ना? ये तुम्हारा इनर टायर था और ये तुम्हारा आउटर टायर. इनर टायर के ऊपर कम रिएक्शन फोर्स था कंपेयर टू आउटर. लेकिन अगर मैंने ये सरफेस को बैंड कर दिया स्टूडेंट्स, नाउ आई एम बैंकिंग द सरफेस. So now see my inner tire will be over here. My outer tire will be somewhere over here. And my car will be in this manner. Which was initially in this way. है ना? देखो. Now can I say? Now my car is firmly in contact. यहाँ पे मेरा reaction force कम था. यहाँ पे मेरा reaction force कम था as compared to this. And my N1, Ni was less than N outer. But now my Ni and No will be more my normal reaction force को on the inner side मैंने बढ़ा दिया. And I have tried to increase as compared to it. Now both of them are same, are identical. We consider दोनों केस में same है. I mean there is no less. Banking कर दिया. And the car is performing circular motion. This is the inner edge and ये टायर का inner side. तो देखो ये टायर का inner side is raised as compared to outside. तो ये जो width of the road constant, ये मैं बोल सकता हूँ length between the two tires. Yes. This is the height of the outer tire from the original ground. Yes. And this angle is angle of banking. क्या ये क्लियर हुआ डायग्राम? Yes. Yes, sir. तुम्हारा इनर रिएक्शन फोर्स अभी देखो, अरे हाँ सर अभी मेंटेन कर दिया आपने. Now can I gain speed? Yes, now you can gain speed, students. Now you can gain speed. क्योंकि अभी तुम्हारी कार, अगर अभी तुम स्पीड बढ़ाओगे तो नाउ सपोज अगर ये कार की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आती स्टूडेंट्स, तो तुम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं. लेकिन तुमने 100 से 110 120 जाने लगा तो शायद पलटी खाते थे. लेकिन अब ये बैंकिंग की वजह से नाउ यू कैन रन विथ 120 किलोमीटर पर आवर इजीली and you will not topple. So now can I say, will you reach the destination in less time? Yes. Did you fidgeted with anything of the surroundings? No. तुमने ना ही यहाँ के कुछ कंस्ट्रक्शन को नुकसान किया है, ना ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को नुकसान किया है. Are you getting it? ना ही तुमने एक शॉर्ट डिस्टेंस बनाया, नहीं, उसी लेंथ ऑफ रोड, उसी डिस्टेंस को तुमने क्या कर दिया है, तुमने सिर्फ बाहर के रोड को बढ़ा दिया, बाहर साइड को ऊपर ले लिया थोड़ा सा एज कम्पेयर टू, यानी पूरे रोड के ऊपर एक लेयर बिठा दिया और वो बैंक कर दिया तुमने. And that is called as banking to gain speed. Now let us go for a mathematical expression for a car on a banked road. So let us go for this. तो देखो ये तुम्हारा थीटा, agreed. ये है तुम्हारा angle of banking. Let me take car to be as a point mass. तो तुम्हारा ये कार यहाँ पे आ गया students. This is a car. I can consider the car. The car is performing circular motion in this manner, students. It's going on a circular path.
Can I get the formula for maximum velocity on a car on a banked road? तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये कार सर्कुलर मोशन कर रही है तो यहाँ पे एक फोर्स चाहिए, है ना? वो कौन सा फोर्स होगा सर? फोर्स सेंट्रीपिटल तो हो गई। दूसरे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहा है सर? कार के यहाँ पे नीचे की तरफ तो mg एक्ट होगा। यस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को सर है सर, कार टिल्टेड है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, रोड सरफेस इंक्लाइन है ना, तो इंक्लाइन है तो हाउ इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सर? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, है ना? ये mg जा रहा है। अगर कार सर्कुलर मोशन, स्टूडेंट द कार इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, स्टूडेंट द कार इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एग्रीड? सो व्हाट आई नीड टू रिजॉल्व n। तो इसमें n को रिजॉल्व करूंगा इनटू टू कंपोनेंट्स। ये देखो, ये होगा वर्टिकल और ये होगा हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? mg को रिजॉल्व नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, माय कार इज नॉट गोइंग अप एंड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। हेलो, शायद तुम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में किया होगा। A block placed on an inclined plane, up the plane, down the plane. If a block comes down the plane, what is the force required? mg sin theta. हम वो सारे नहीं कर रहे हैं। My students, listen to the English which I'm speaking. My car is going along the plane. Are you getting it? But it's going in a circular path, not up and down. It's maintaining the speed at a constant rate. क्या ये diagram clear हुआ students? Yes, sir. Everyone, please, I'm not explaining just one student. What are the rest of them? See, now Yes. the time is just less than 15 Sir, minutes. clear. Less than 15 minutes, 5 students are out. यह है प्रॉब्लम। यहाँ पे एक आयन खान है, बाकी 2 आयन निकल गए। एक दिस इज ये आयन खान सही बन रहा है, 50 वाला, 51 रोल नंबर वाला निकल गया। ये प्रॉब्लम है। ध्रुव ध्रुवी जोशी भी है, हर्षद अभी तक है, आई एम सो हैप्पी। दोनों ज्योतिष भी है, वेरी गुड। अच्छा, नीतू भी है, फाइन। यश भी है, सुजीत भी है, there are few students who have gone. See, that depends on an individual how to take your studies. तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व किया। स्टूडेंट्स ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये n यहाँ पे लिखूंगा। तो ये थीटा तो कहने से ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा। स्टूडेंट्स वेयर आर यू गेटिंग थीटा? ये थीटा होगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? n cos थीटा, और ये हो जाएगा n sin थीटा। Now can I say the n sin theta, that is students component of the normal reaction force. Component of the normal reaction force, students, is actually the real force centripetal required for the car to move on a circular bank road. अभी यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए फॉर्मूला? वेलोसिटी चाहिए। तो फोर्स सेंटीमीटर के 3 फॉर्मूलाज हैं। कौन सा तुम उठाओगे? सर हमें मास ऑफ द कार दिया होगा, हमें v पूछा है तो मैं v स्क्वायर ही लूंगी या v स्क्वायर ही लूंगा। सर हमें सर्कुलर पाथ है यानी रेडियस तो देंगे, या तुम फाइंड आउट कर सकते हो। सर्कमफरेंस दिया होगा तो 2 पावर की सबसे रेडियस निकाल सकते हो। तो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। व्हाट अबाउट n sin थीटा? सर n sin थीटा balances the weight of the car, sorry n cos theta, since n cos theta balances the weight of the car mg, vertical forces, horizontal, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। Now can I take the ratio of the two? Why not? N gets cancelled. What is sin theta upon cos theta will be tan theta. Do we have any cancellation? Yes, sir. N gets cancelled. So what exactly? V square by RG. I need formula for V. So can I say V max is equal to what? Under root RG tan theta. Is this clear, students? Students, is it clear? Yes, sir. So the maximum velocity of a car on a circular bank road is under root RG tan theta. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे म्यू आया है फॉर्मूला में? नहीं, क्योंकि हम लोग तो फ्रिक्शन को कंसीडर ही नहीं किया। क्योंकि हम जब इस सर्कुलर पाथ में जा रहे थे तो अनबैंक के लिए तो म्यू हम लोग ने लिया था, लेकिन म्यू के ऊपर हम ट्रस्ट ज्यादा नहीं कर सकते। म्यू को इंक्लूड कर सकते हैं बैंक के ऊपर, लेकिन प्लेन सरफेस के ऊपर म्यू को ट्रस्ट नहीं कर सकते, अनट्रस्टवर्दी है। दूसरी बात, अगर तुम रेडियस बढ़ाओगे तो वी ऑल्सो शुड इंक्रीज,
and theta is the angle of banking. Now try to understand this. Now have you seen banking is taking place on railway lines also, students? कभी देखा तुमने? शायद पता नहीं तुम लोगों ने कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के ऊपर देखा होगा या somewhere students, I don't know about it, whether you have come across, suppose if you happen to go towards town side by train, I don't know how many kids must travel by train. बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जो ट्रेन से ट्रैवल भी नहीं करते होंगे स्टूडेंट्स. सो अगर तुम ट्रैवल करते हो स्टूडेंट्स, ट्राई टू गो टुवर्ड्स टाउन साइड स्टूडेंट्स. ओके, कभी कभार मैच देखने जाना स्टूडेंट्स ब्रिगोन स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम में. ओके, तो जब भी ट्रेन से जाओगे तो बियॉन्ड ग्रैंड रोड स्टेशन से आगे जाओगे ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे तुम एक्चुअली देखोगे ना, वहाँ पे सर्कुलर ट्रैक्स है स्टूडेंट्स ट्रेन की. अपनी जो वेस्टर्न रेलवे जो यहाँ की रेलवेज है, अगर तुम मला, जोगेश्वरी, अंधेरी रहते हो तो वहां से तुम कैच करोगे स्टेशन से ट्रेन आगे जाके, वो कर्व है. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द ट्रेन, यू वोंट बिलीव यू विल बी एबल टू सी द फ्रंट कंपार्टमेंट. आगे वाला कंपार्टमेंट देख सकते हो, इतना कर्व दिया है, इतना कर्व है. और तुम ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब भी वो ट्रेन कर्व पे जाती है ना, उसी टाइम पे ट्रेन को भी बैंकिंग दिया है, क्योंकि वहां पे कर्व के ऊपर अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ती है, क्योंकि उनको तुरंत पहुंचना है ना डेस्टिनेशन पे, तो उनको बैंकिंग देना जरूरी है. अगर वो ट्रैक्स को बैंकिंग नहीं देते ना, तो ट्रेन भी डीरेल हो सकती है स्टूडेंट्स. और तुम वहां पे एक दफे जाओगे तो ये फीलिंग लेना जरूर स्टूडेंट्स. वहां पे जाओगे ना तो पूरा सर्कुलर ट्रैक है. तुम अगर गेट के ऊपर खड़े होते ना कोई भी कंपार्टमेंट के, तो तुम्हें आगे वाले कंपार्टमेंट दिखेगा, और पीछे देखो तो पीछे वाला कंपार्टमेंट पूरा सा टेल दिखेगा तुम्हें. लेकिन उसी टाइम पे तुम कंपार्टमेंट के अंदर फील करोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कंपार्टमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं है, कंपार्टमेंट थोड़ा सा टिल्टेड है. तुम क्या करो मालूम है, कंपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे तुम एक कॉर्नर पे बैठो ना, वहां पे तुम अपनी वाटर बॉटल रखो सीट पे, और जैसे वो ट्रेन टर्निंग पे जाएगी ना, ऑटोमेटिकली वाटर बॉटल रोल होके एक तरफ आएगी. यू माइट सी देयर इज अ स्लोप क्रिएटेड एंड यू विल फील द स्लोप. तुम अगर खड़े होंगे ना तो थोड़े से गिरना भी शुरू कर दोगे, उतना बैंकिंग दिया हुआ है. दैट मीन्स द आउटर रेलवे लाइन के दो रेल्स होते हैं, तो आउटर रेल इज रेस्ड एज कंपेयर टू इनर, and that is called banking provided in trains. और वो क्यों देते हैं? अगर सपोज सिविल इंजीनियर्स ने वहां पे बैंकिंग नहीं दिया है, रास्ता सर्कुलर, चलो बैंकिंग नहीं देते है. एक सिविल इंजीनियर ने वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसने बैंकिंग नहीं दिया. अभी ट्रेन आ रही है और उसको तुरंत पहुंचना है वहां पे, तो उस बंदे ने स्पीड बढ़ा दी और टर्निंग पे जा रहे हो तो भाई, तो तुमने व्हील को एक्सीड कर दिया, तो तुम तो डीरेल हो जाओगे, क्योंकि इनर व्हील को कम रिएक्शन फोर्स है, तो तुम डीरेल हो जाओगे, तुरंत रेलवे ट्रैक से बाहर आ जाओगे. In order to avoid derailing of the train, students, the outer end is raised as compared to inner. So banking takes place in railway tracks also, students. जैसे मैंने एग्जाम्पल कार का दिया, ट्रेन का दिया, तुरंत वहां पे स्टूडेंट बोलेगा सर फ्लाइट्स में भी तो बैंकिंग होता है ना. सर जब मैं फ्लाइट में गया था तो पूरा एयरक्राफ्ट ऐसा टिल्ट हो गया था. जब भी हम अगर कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट टर्निंग पे जाता है हवा में, तो डोंट यू थिंक सो जब भी टर्निंग पे जाएगा तो डज द पायलट कीप्स द विंग्स हॉरिजॉन्टल? नो. ये सोचिए ये इनर विंग और ये आउटर विंग है, ही विल ट्राई टू टिल्ट एंड देन ही विल गो. अगर बाय चांस वो टिल्ट नहीं करता एंड इफ इट ट्राइज टू मूव सर्कुलर, the inner wing will get less reaction force as compared to outside. What happens? वो टॉपल मारेगा. The thrust is more in that case. अब thrust वहां पे कम है तो वो टॉपल मार देगा वहां पे, और पूरा तुम्हारा एयरक्राफ्ट टॉपल होके वहां पे जाएगा. यानी जब भी तुम एयर शोज देखते हो ना स्टूडेंट्स, फाइटर प्लेन्स, तो फाइटर प्लेन्स जानबूझ के उनको टॉपल करने के लिए वो क्या करते हैं, बैंकिंग नहीं करते उस टाइम पे. वहां पे हाई इनटू द एयर ऑल्टीट्यूड्स पे वो सर्कल में जाते हैं, लेकिन वो जानबूझ के बैंकिंग नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली टॉपल होगा. लेकिन वो पायलट इतना स्ट्रांग है कि वो कंट्रोल कर सकता है उसके एयरक्राफ्ट को. दैट इज व्हाट दे आर ट्रेन्ड फॉर. व्हाई डू दे टॉपल? ये सब ट्रेनिंग क्यों होती है? ये ट्रेनिंग सब क्यों होती है? एयरक्राफ्ट को टॉपल करने के लिए, वहां पे टू मिस आउट द मिसाइल्स. फ्रेंड्स, वॉर के टाइम पे जब भी ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स आती है एयरक्राफ्ट को शूट करने के लिए, तो अपना पोजीशन चेंज करना आना चाहिए, नहीं तो मिसाइल इज गोइंग टू हिट. अगर वो एयरक्राफ्ट बेचारा सीधा जाता रहेगा तो हमेशा अगर तुम चेंज करोगे अपना पोजीशन तो यू कैन मिस आउट द मिसाइल. दैट्स व्हाट दे आर ट्रेन्ड फॉर.
So now if somebody asks you, does banking take place on circular road? Yes. Does banking takes place in a railway track? Yes. Does banking takes place in air? Yes. What's the formula for maximum velocity of a car on a banked road? Under root RG tan theta. What does theta stands for? Angle of banking. What is angle of banking? Outer end of the road is raised as compared to inner by height h. What exactly is this theta? Very large or very small? Very small. So h by L. So can I say tan theta can be nearly equal to sine theta because theta is very small and sine theta is opposite of my hypotenuse. So can I say h by L? So instead of tan theta, can I write down over here h by L also? Yes. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Can I erase it now? Yes, sir. Next lecture will be continuing further action. So please kindly see that I want to revise. Okay. And students, when exactly you have your major test? Sir, on this Sunday. And what is the topic in physics? Sir, kinematics is there, NLM is there, and Vector Calculus. And calculus is it. Very good. So please students try to practice the calculus problems and kinematics. की जो भी problems हम लोगों ने किए, please revise them. Go through the formulas properly, students. You're getting it? And read your questions very carefully. Yes, Okay, sir. and try to go for more of positive scoring rather than going for negative. Okay, Yes, sir. so all the best.